क्लास है इसके बाद कर लेता हूँ Good morning, sir. गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning, sir. 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 गुड मॉर्निंग Morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. Good morning, Vivek. So one student has have mailed some questions. So I have uploaded their solutions on the LMS. Manpreet? Yes, sir. I think I don't remember the name, but I uploaded those solutions on web LMS. Yes, sir. I have informed him. So I think I also mailed him. किस चीज के सॉल्यूशन सर? कोई डाउट पूछा था किसी ने मुझसे? सर आपने वो जूम रिकॉर्डिंग्स नहीं अपलोड की हुई आपने? कुछ मतलब प्रॉब्लम है चाहिए आपको जरूरी? You need? हाँ जी सर। Yes, sir. यार इसमें प्रॉब्लम क्या Yes, होती है ना, डिस्टरबेंस बहुत है, डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है। मैं तो आपको जो परिमिता मैम वाले नोट्स हैं वो प्रिसाइज नहीं है वहां पे। सर हम आपका देखते हैं ना तो ऐसे कंटिन्यू होते हैं ना, मतलब कुछ टॉपिक मिस हुआ है तो उसमें देख ले, सही रहते हैं सर। चलो ठीक है यार, मेरे माइंड में ये था, मैं जब भी देखता हूँ ना उसमें डिस्कशन, अब जैसे वो nth टर्म वाला था ना, उस सारे लेक्चर में आई थिंक 10 मिनट्स का लेक्चर था, तो मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया उसको। अच्छा वो एक रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया मेरे से। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अब करता हूँ इसको प्रॉपर। अगर सर आप कट करके लगा दिया करो सर वहां पर। वो कट करने की क्या जरूरत है, सीधा ही कर दो। इतना टाइम नहीं होता ना सर, सीधा ही कर दिया करो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं सर सीधा लगा दिया करो, हम नहीं तो देख पीडीएफ तो लगा रहा हूँ उस पे, बट चलो अगर आपको लगता है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मस्ट है तो वो भी कर दें, कोई इशू नहीं है। So I'm sharing my screen. एक बार पता नहीं एक टक्कर है कि So in last lecture, Manpreet, am I audible? Yes, sir. Okay, so I'm starting my lecture. So in between अगर कोई serious कोई doubt है तो you can raise, otherwise ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से करते रहना। जी. So shall I start? Yes, sir. How many participants are there now? Sir, right now 227. Okay, fine. I think इतना ही कुछ student है हमारे पास। And so in last lecture, so what we were doing was integral test. So we have seen Sn is the best solution, limit n approaches to infinity Sn for summation an. Then we know one is geometric series test. There is nth term test. But still, we were not able to find solution of these type of series. Summation 1 by n, summation 1 by n square, or summation 1 by n raised to power p, where p is positive. So then we applied this integral test. So what this integral test is, if summation an, n from n0 to infinity,
is an infinite series or simply series with number one, an is greater than equal to 0, it is positive. Now if an is equal to fn, we are giving functional form, then fx is continuous, fx is decreasing, fx is decreasing, or series is decreasing. So one, you can use either mode. Then series n from n0 to infinity and integral fx dx n0 to infinity converge or diverge together. So that was the last lecture's content. And then using this integral test, so we have shown that summation 1 by n raised to power p, so n from 1 to infinity. So this series is convergent if p is greater than 1, and this series is divergent if p is less than equal to 1. Yes, Aman Arora, what is your point? सर एक्चुअली इसका प्रूफ समझ नहीं आया था इंटीग्रल टेस्ट का. Okay, just leave that proof, छोड़ दो उसको proof. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया. स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑफ किया है, मैंने आपके पास गया हूँ. अगर आपको उसका प्रूफ समझ नहीं आ रहा, टू विच ग्रुप यू बिलोंग? आपका ट्यूटोरियल ग्रुप क्या है? COE 21. 21. You just ask me that doubt in your group 21. ठीक है? Yeah sir, thank you sir. Okay. I think now just focus on this class lecture. If that proof is not clear, this lecture is not going to affect you. But otherwise, अगर आपका जो ऐसे अपना माइंडसेट रखोगे तो आप कहीं नहीं हो पाओगे. Just focus on this class lecture only. Now the screen is visible. Manpreet? Yes, sir. Okay. So then in the last lecture, we have shown that is this summation 1 by n raised to power p. So this series is convergent if p is greater than 1, and this series is divergent if p is less than equal to 1. That means now we are able to say that we are now in a position to say that 1 by n square. So this series is convergent because this p is greater than 1. Summation 1 by n, it is divergent. Summation 1 by n raised to power 3 by 2. So this series is convergent. Summation 1 by n raised to power 100. So that is convergent. So all these series are convergent where p is greater than 1. And the series summation 1 by n or summation 1 by n raised to power 1 by 2 square root. So this series is divergent. Now if the series is convergent, we can definitely talk about its sum. So we are not going to find sum here. We'll just discuss convergence or divergence. So this question I have solved. थोड़ा last time कुछ थोड़ा confusion था, so कुछ मैंने ये notation वाला change किया था, less than equal to, उसको please set कर लो कि for p greater than 1 it is convergent and p less than equal to 1 it is divergent. Though I've solved this question in last lecture, and this question is also solved in your textbook. So I will take 2-3 more questions on this test, and then I will switch over to next. So the question is, I have selected some questions from that. So that question is, discuss convergence or divergence of the series. So this question is from, I think, exercise 8.3 or 8.4. So which is with integral test. So question number 1 is 1 by under root n, and then it is under root n plus 1.
So discuss convergence or divergence of this series. Now, if you are going for Sn, you are not able to find any compact sum. If you are taking limit n approaches to infinity an, it is equal to 0, but is not going to solve any purpose because it is simply a necessary condition. So on the basis of this condition, only we can justify, yes, this series may converge, but it is not definitely sure whether it is going to converge or not. So we have to apply some concrete test. So we are going to apply integral test. So by applying, but before applying integral test, you have to see, can we apply integral test? So here an. So here an is 1 by under root n and then into under root n plus 1. And what is its corresponding function? So if we take f of n equal to an, so that means f of x. So it is 1 by under root x and then into under root x plus 1. Now, point number 1. So this an or fx. So n is running from 1 to infinity. So we are taking range for x also from 1 to infinity. So fx is greater than equal to 0. So for all x greater than equal to 1. Next is we have to show that this fx is decreasing function or an is a sequence of decreasing term. आप इस side से show कर दो या यहाँ पे show कर सकते हो. So I'm taking from this fx side. So fx is equal to 1 by under root x and then under root x plus 1. So I want to differentiate. So I'm making partial fractions. So it is under root x plus 1 and then minus under root x. So it is root x into root x plus 1. So it is cancelled. Sorry. So don't remove this. So it is root x plus 1 and then minus root x. So net term is 1. So root x and then root x plus 1. Now if we divide, so we are getting root x plus and then minus 1 by root x plus 1. So it is its partial fraction. Now if I differentiate, so what is f dash x? So f dash x is minus 1 by 2 x raised to power minus 1 by 2. And if I take second term, so it is minus of minus 1 root x plus 1 raised to power minus 2 and then into derivative of under root x. So it is 1 by 2 into x raised to power minus 1 by 2. Or finally, I'm going to get minus 1 by 2 under root x and then it minus plus. So it is 1 by 2. So from here, it is under root x and then into 1 by this root of x plus 1 square. Now you can see this term minus 1 by root 2x and it is 1 by root x plus 1 whole square. So it is going to decrease its magnitude, or even you can take this term as LCM. So it is 1 by 2 root x and then it is 1 by root x plus 1 whole square and then minus 1 by root x. So it is 1 by 2 root x, then it is root x into root x plus 1 whole square, then it is root x minus root x plus 1 whole square. So it is 1 by 2 root x, then it is root x minus 1 and then it is minus 2 root x divided by root x plus 1 whole square. Or it is 1 by 2 root x, then it is minus root x, then minus x minus 1. So root x into root x plus 1 whole square. So the idea of this whole calculation is if for x greater than equal to 1, this term is always going to be less than 0. This term is always negative. Even you can claim it from this term itself that this term is going to be lesser than this term and it is always going to be सर वो ऊपर से स्टार्टिंग से 3 by 2 आएगा x की सर. पावर minus 3 by 3 2 by आएगा 2 सर. आएगी. Yes, sir.
वो मल्टीप्लाई में है, Dash वो x में x वो 1 नहीं आ जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा वहाँ पे, -1/√x + 1 द होल स्क्वायर -1 -3/2 आ जाएगा। -3/2 आएगा सर। 1/√x की जगह 1 नहीं होगा? 1 नहीं होना, 1 होना चाहिए, वो एक मल्टीप्लाई टाइम में है, बोलो। मल्टीप्लाई में है वो। एक मिनट, चलो ठीक है। Just apply your calculations and tell me कि whether for any value of x this f dash x is positive or not. ठीक है, जरा करिए, I'm giving you 1 minute. Just tell me for any x if f dash x is positive. Excuse me, sir. हाँ जी, सर इसमें एक कंडीशन होती है कि an + 1 इज लेस देन an. yes. तो सर हम उसमें नंबर्स नहीं डाल सकते, जैसे n की वैल्यू पहले 1 डाल दी? I think हम ना आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं। प्लीज किसी एक पैटर्न पे चलिए। इधर अगर आपको कोई फॉल्ट मिलता है इसमें, फॉल्ट चेक करके बताओ मुझे कहाँ पे है, एंड देन टेल मी वेदर इट इज पॉजिटिव फॉर एनी एन, अदरवाइज आई हैव अदर मेथड्स, कर देंगे उससे भी solve, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मनप्रीत, है इसमें कुछ इशू? सर बच्चे बोल रहे हैं सर डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है, मुझे कोई बात पॉइंट नहीं, डेरिवेटिव चेक करने दो, हमारे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको करने दो चेक। जरा एक बार चेक करके बताओ वेदर इट इज पॉजिटिव। जस्ट लीव असाइड दिस कैलकुलेशन में बाद में चेक करूंगा। आई थिंक कि यहाँ पे ये टाइम नहीं है। सो माय सिंपल क्लेम इज, you just check, कहीं पे गलती आता है तो मेरे को डिस्कशन करें आप, कि this f dash x it is going to be less than 0 for all x greater than equal to 1. So just forget all calculations, check them. हाँ, और जो आप कह रहे हो नेक्स्ट कि an + 1 less than an, so you're not going to prove it for some 1 or 2 number, you have to prove it for all x. आपको हर n के लिए प्रूव करना है, जस्ट 1 या 2 के लिए नहीं। आपके पास है ना 1/√n into √n + 1। सो आपको 1 2 के लिए नहीं, आपको सबके लिए प्रूव करना है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है वो। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ मोड कि n + 1। सर उस जगह n और n+1 लेके कर लें। मैं बता रहा हूँ आपको, और मैंने लिखा है ना यहाँ पे, यू कैन यूज दिस टाइप और यू कैन मूव फ्रॉम दिस साइड कि n + 1 + 1, so it is always going to be greater than √n + 1। ये बताओ। यस सर इसमें नेगेटिव आ रहा है सर वो डेरिवेटिव। तो मैंने भी क्लेम किया ना, डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है सर, कैलकुलेशन उसको चेक कर लो, बट माय क्लेम इज इट इज डिक्रीजिंग सीरीज। हाँ, यहाँ से नहीं होता, सो आई एम गिविंग यू वन मोर टेक्निक कि √n + 1 + 1, so it is always greater than this term n + 1, it is always greater than √n. Now if I multiply these two, so then n + 1 + 1 and then into n + 1, it is always going to be greater than n + 1 and then this n. So that means if I take the reciprocal, so it is 1/n + 1 and then +1 and then into n + 1. So it is always going to be less than this term. Now if you see the mechanism of this term, so this term is nothing but over an + 1 and this term is nothing but over an, so an + 1 is less than an. So if you want to use this side, even you can use this calculation, but it should not be for 1 2 3 4 only. It should be for all n, from wherever you want to start, you have to give that figure, but this equation is true for all n greater than equal to 1. So just check this calculation जो भी है, I'm not मतलब यहाँ पे आपके 5th 6th वाले स्टूडेंट नहीं है कि मैं उनको चेक करके दिखाऊं, अगर गलती है चेक करो उसमें एंड फाइंड सर ये कैसे किया सर, दोबारा बता दो। ये n + 1 √n + 1 greater than √n से बाद। हाँ जी, व्हाट इज योर an? अब बेटे जवाब देते रहना मेरे को प्लीज। व्हाट इज an? Yes, I am asking from you, last student, what is an? मैम सर लिखा तो है सर 1/√n और वो। हाँ, so what is our job? क्या चाहते हो आप? मैं सर इसके बाद वाला पूछ रहा हूँ मैं, √n+ जो अरे आपने भाई, explain किया। अब जब क्वेश्चन किया तो भागते क्यों हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज अवर जॉब, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं? डिक्रीजिंग प्रूफ कर डिक्रीजिंग प्रूव करना चाह रहे हैं। तो डिक्रीजिंग कब प्रूव होगा? व्हेन an + 1 is less than or equal to an. ठीक है, so if this term is an, then what is its corresponding an + 1? So it is 1/n + 1
and then into n plus 1 under root plus 1. +1, yes sir. ठीक है, अब मुझे इसका और इसका कंपैरिजन करना है, Okay. या तो डेरिवेटिव से कर लो, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ। तो जरा बताओ जरा, क्या इस इनइक्वालिटी में कहीं कोई गलती है? On one side it is root n plus 1 and here I am replacing n by root n plus 1. भाई n plus 1 is always greater than n, इसमें तो कुछ प्रूव करने वाला नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया, नेक्स्ट में मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। इट इज वेरी वेल नोन रूल ऑफ एनालिसिस, अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, यहाँ पे c ग्रेटर देन d है, देन ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन bd। तो इन दोनों Yes, को sir. मल्टीप्लाई किया, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, and if a is greater than b, 1 by a is less than 1 by b, so you are getting same result. तो Okay. आप डेरिवेटिव से जाएं चाहे वहां से आए, बट you have to make sure whenever you are applying integral test that this series is decreasing series or your function is decreasing. आपको कुछ ना कुछ एक ना एक प्रूव करना होगा, otherwise you can't apply integral test. If the question is of 4 marks, so 1 mark is kept for this checking itself. So the whole calculation says कि जो आपका series है, that series is of decreasing term, or the function fx, it is an decreasing sequence. So which implies we can apply integral test. So what is integral test? So integral test says कि behavior of, आपने integral test क्यों लिया है? So integral test says कि summation an or integral function fx. So your starting number to infinity, either both are convergent or both are divergent. Now we are just going to our function. So that function is integral I. So this integral I is 1 by under root x and then into under root x plus 1. It is from 1 to infinity and then dx. I just evaluate this integral. So how will you evaluate this integral? So we are putting this under root x plus 1 equal to t, and then it's 1 by 2 root x dx. So it becomes dt, or this dx by root x. So it is equal to 2 dt. So when x is, so we have to change, either solve question in terms of x itself. You are not going to you're not supposed to change these limits, or otherwise if you are changing your variable, then you have to change these limits accordingly. It depends upon you. जैसे चलना आप वैसे भी चल सकते, जो आपका मूड करता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। So one mode is I have replaced more under root x by t. So when x is equal to 1, so when x is equal to 1, this t becomes 2, so it becomes 2 to infinity. So this 1 by dx by root x, so it becomes 2 dt, and then divided by root x plus 1, so it becomes t. So it is 2 by t, and limits are 2 to infinity. When x is infinity, then t is also infinity. So it is 2 ln t, and the limits are from 2 to infinity. So that means it is going to be ln infinity. So infinity minus ln 2. It is not going to be a finite number. So it is not a finite number. So if it is not a finite number, so that means this series is done. So integral is divergent. So which implies by integral test over given series is also done. सर एक बार ये फिर समझा दीजिए कि हाउ टू शो दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एलिजिबल फॉर द इंटीग्रल टेस्ट और नॉट। ओके सर मैं एक चीज पूछ लूं? सर हम इसमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। See, सर I will not take any question further. Please let me clarify. उसके बाद next question करता हूँ, फिर आपको टाइम दूंगा, ठीक है। Questioning just for the sake of questioning मत करो प्लीज यार। See, this series is infinite series. So this infinite series, we have to check its behavior, and we are checking its behavior for integral test. So for applying integral test, so there are 3 conditions. An must be positive. If you are taking an as fn, that means the corresponding function fx, it should be continuous and function should be decreasing, then its behavior can be judged by this integral itself. Now the question was, it discuss convergence or divergence of this series.
and we want to apply integral test. So first, this term is 1 to infinity, so its corresponding function is 1 by root x and then root x plus 1. This type of function has only one threat, and that threat is if root x is 0, that means that x equal to 0, or root x is minus 1, so that threat is from these two sides. But over x or n, it is always from 1 to infinity, so there is no threat to its continuity. So वो लिखा नहीं है हमने, but that is already there. The next term is whenever you are moving from 1 to infinity, n को आपने x से relate किया है. So whenever your n or x is greater than 1, this term is always positive. Two conditions are satisfied. Now you have to show this function is decreasing or not. So you have two options. Either you can show this sequence is a decreasing sequence, or you can show this function is a decreasing function. So if this function is a decreasing function, we can take help of differential. So what you have to show is that f dash x is less than equal to 0. So मैंने डेरिवेटिव निकाला है और डेरिवेटिव को शो किया लेस देन इक्वल टू 0. अगर कहीं पे कुछ में डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है, you can check, but your result will be same. Or the other mode is you can show this sequence of decreasing term. तो उसके लिए मैंने आपको ये शो किया है. Then you have to show कि an plus 1 is less than an. तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को यूज किया. So from this combination I have shown an plus 1 is less. आपको कोई एक करना है, either show this one or show this one. Don't waste your time in checking both. सिर्फ एक से प्रूव कर दो. So once all the three conditions are satisfied, so we can apply integral test. So when we can apply integral test, so I've taken this question for I equal to, I've replaced n by x. So it is motive of changing n by x is we are using in differential integrations. Integrations are for continuous range. तो थोड़ा n में जो है वो discrete का मतलब फीलिंग आता है, तो इसलिए हमने इसको x से रिप्लेस किया. And then it was simply an integration by substitution. Value of integral is infinite. Integral is diverging. So because of integral test, this series is also diverged. I'm giving you second question. If you want to ask any question, you have to do this question at yourself. Then I can take your doubts. But otherwise, मेरे को लगता नहीं आपको ऐसा कोई doubt है. So just apply your whole steps for this question. I think कि आपको सारे doubts जो है वो बीच में निकलते जाएंगे. करिए जरा इसको ट्राई. दिस सर हमने यहाँ कॉन्टिन्यूटी का शो नहीं करा, तो नहीं शो करेंगे तब भी चलेगा टीचर को? मैंने यहाँ पे क्या बोला यार, आपको मेंशन कर दो यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक लाइन लिखना है यहाँ पे, ठीक है. यू कैन मेंशन दैट वर्ड एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज कॉन्टिन्यूअस. कोई आपने को लेफ्ट राइट लिमिट थोड़े निकालना है यहाँ पे. Now, just go for this type of question. So it is 2 by e raised to power n and then plus e raised to power minus n. And n is from 1 to infinity. So actually this function belongs to hyperbolic category. So उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. Or the question is discuss the convergence or divergence of secant of hyperbolic n. So in one of my previous lecture, I have explained what is meaning of hyperbolic functions. Sine of hyperbolic x. So it is e raised to power x minus e raised to power minus x by 2. Cos of hyperbolic x is e raised to power x plus e raised to power minus x by 2. These hyperbolic functions, so ये जो है exponential के combination से आते हैं. It is not sine of hx, it is sine h of x, cos h of x. तो आपके पास question है, discuss convergence or divergence of this series secant of hyperbolic n. So secant of hyperbolic n, just like your trigonometric formula, it is 1 by cos, और cos का result होता है ये. So in all we have to discuss convergence or divergence of this series. Yes, करिए जरा start. So what should be our first point? An is 2 by e raised to power n and then plus e raised to power minus n. And its corresponding function is fx. So if we take fn equal to an, then f of x. So it is 2 by e raised to power x plus e raised to power minus x. हाँ जी, अब सारा जरा करते हैं दोबारा से. बताइए भाई. So can fx be negative at any stage? E 2.718 n 1. So x is greater than equal to 1. E raised to power 1, 2, 3 positive. E raised to power minus 1, minus 2. So 2.7 raised to power कुछ भी हो, it is always going to be a positive number.
So fx is always greater than 0. चलो continuity भी लिख देते हैं. So where is the threat to its continuity? So continuity threat is when its denominator is 0. So denominator कब 0 होगा? When e raised to power x plus 1 by e raised to power x 0 होगा, और e raised to power 2x equal to minus 1 होगा. So e raised to power 2x equal to minus 1. So इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2x is ln of minus 1. तो किसी फाइनाइट नंबर के लिए आपका जो e raised to power 2x है, it is not going to be negative number. So that means there is no threat to its continuity. So fx is also continuous. by 4 आ रहा है. सर ये डाइवर्जेंट आ रहा है सर. So I think कि मुझे करने दो क्वेश्चन. अभी कोई पूछ लेगा इसको continuity कैसे कर दिया आपने. ठीक है. So then fx is also continuous. Then the third is its decreasingness. So how can we prove it is a decreasing function? So again, you can take help of sequence or you can take help of function. So if I'm taking this f dash x, so what is f dash x? So it is d by dx of 2 by e raised to power x plus e raised to power minus x. So what is its derivative? So 2 into, so minus 1 by e raised to power x plus e raised to power minus x. इसमें आपका -2 हो गया, तो नीचे स्क्वायर, and then it is derivative of e raised to power x plus e raised to power minus x. So it is e raised to power x and then minus e raised to power minus x. And so it is minus 2 e raised to power x minus e raised to power minus x and then divided by e raised to power x plus e raised to power minus x. So when x is greater than 1 and e is 2.718 something, so e raised to power 2.78 raised to power this, and it is e raised to power 2.71 raised to power minus x. मतलब एक तरफ आपका 2 raised to power 2 है और एक तरफ आपके पास 2 raised to power minus 2 है. So this number is always going to dominate this number. This e raised to power x for x greater than 1 is always going to be more than this number. So this number is positive, and because of this negative, this number is always going to be less than 0. Negative. So f dash x is less than 0. So that means fx is a decreasing function. So which means we can apply integral test. Now what is integral test? So I is its behavior can be judged by 2 by e raised to power x plus e raised to power minus x, and then it is 1 to infinity. Now I have to solve this integral. So for its integral, so it is 1 to 2, then it is 2, and then I'm taking help of e raised to power minus x. So if I extract e raised to power minus x, so then it becomes 1 plus e raised to power 2x, then it is dx, or it is 1 to 2 e raised to power x 2 divided by 1 plus e raised to power 2x dx. Now it is up to you. You can take e raised to power x equal to t, then this term will be d2 dt divided by 1 plus t square, or otherwise you can simply do all your calculations in your mind. So it is simply like e raised to power 2x. So what is its derivative? So its derivative is 2 e raised to power x. तो ये आपके पास dt by 1 plus t square होगा, और simply it is tan inverse e raised to power x. तो अब मेरे पास एडवांटेज ये होगा कि मुझे इसका लिमिट्स को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है. So it is 1 to infinity. So when x is approaching towards infinity, it is tan inverse infinity. So it is pi by 2 and then minus tan inverse e. So pi by 2 is a finite number, tan inverse e, tan inverse 2.718. It is also going to be some finite number. So that means this limit is finite, or the nature of this series. So it is matching with the nature of this integral. So this integral is finite. So that means this series summation an, so n from 1 to infinity, is also convergent by integral. Yes, I can wait for 1-2 minutes. If any doubt is there, you can ask.
सर आपने 2 को कैसे सही किया? इसमें 2 बाहर नहीं आना चाहिए तो सर इंटीग्रल सॉल्व करते समय। हाँ जी सर इंटीग्रल सॉल्व करते समय 2 चलो बाहर नहीं आएगा, 2 कैसे इंक्लूड किया आपने? ठीक है। तो डज इट अफेक्ट योर कैलकुलेशन समवेयर एनीवेयर? नॉट एट ऑल सर। चलो इसको चेक कर लेना है, थोड़े बहुत जितने पॉइंट 260 की स्ट्रेंथ है कर लिया करो चेक। सर एक डाउट है सर। हाँ जी सर इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते सर, वो जो फंक्शन है आपका 2 बाय प्लीज बेटा क्या नाम है आपका? अनुपम सर। अनुपम। अनुपम यहाँ पे 264 का क्लास आई थिंक, तो मेरा ख्याल है कि हम ना ऑल्टरनेट जो टेक्निक्स की बजाय कोई प्रोसेस पे डिस्कशन करें। मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको कर सकते हो solution, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको e रेज टू पावर x को t पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका e रेज टू पावर x dx जो है वो dt हो जाएगा, तो आप उसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं सर है। मैं ऊपर कह रहा हूँ, वो जो फंक्शन को साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? किसमें? सो डू वी नो प्रॉपर्टीज ऑफ कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक? आपको पता है कि सेकंड हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन क्या होगा, या कोस हाइपरबोलिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? जस्ट टू अवॉइड दोस क्वेश्चंस, सो आई हैव रिप्लेस्ड इट बाय 2 by e raised to power n plus e raised to power minus। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर इसमें भी हम लिमिट्स की तरह ऐसे कह सकते हैं कि दो सीरीज का सम अगर मान लो डाइवर्जिंग है, तो मतलब दो सीरीज अगर डाइवर्जिंग है तो उनका सम भी डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा, कुछ ऐसे कमेंट्स भी कर सकते हैं? अगर है आपके पास तो कर सकते हो। नहीं मैं इफ ऐसे यू पूछ कैन रहा एक्सप्रेस दिस सीरीज एज ए सम ऑफ, देखो दो क्वेश्चन है आपके पास, या तो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया हो कि बाय इंटीग्रल टेस्ट, फिर तो आपके पास कंपल्शन है। नहीं मैं इससे नहीं पूछ रहा सर, मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन हाँ पूछ अगर रहा आपके पास आपका कोई भी सीरीज है, इफ यू कैन शो दैट सीरीज टू बी सम ऑफ टू डाइवर्जेंट सीरीज, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डाइवर्जेंट प्रोवाइडेड देयर टर्म इज पॉजिटिव। अगर ये रिजल्ट जो है सम ऑफ टू डाइवर्जेंट इज डाइवर्जेंट, इट इज ओनली एंड ओनली इफ इट इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, रिमेंबर। ओके। और सर अगर एक डाइवर्जिंग और एक कन्वर्जिंग है तो? हाँ जी, अगर एक डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है देन डाइवर्जेंट, तब हमेशा डाइवर्जेंट। हाँ जी ठीक सर है। वहां पर हमने सर 1 और 1 to 2 क्यों लिया था, वो मतलब नीचे इंटीग्रल? एक मिनट। हाँ जी बोलिए। हाँ सर राइट साइड पे सर 1 to 2 क्यों लिया था? नहीं 1 to 2 नहीं है यार, ये थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेगा प्लीज यार, इसके लिए मेरे को बाद में बता दिया करो। ये 1 to infinity ही है सारा। हाँ जी ठीक है सर, ये जब हमने fx इज लेस देन 0 प्रूव किया, हाँ जी तो उसमें सर आपने वो कैसे दिखाया कि e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ठीक है 1 होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपको यहाँ तक? सर ये तो डिराइव तो मैंने कर लिया पूरा। कॉन्टिन्यूअस वाला बोल रहा है अब सर। जस्ट थोड़ा सुन दो यार, जो आपका ये टर्म है, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। नाउ द दिस टर्म इज, दिस साइन इज नेगेटिव। यस सर। अब आपके पास है e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है। एंड व्हाट इज e? e इज ए नंबर बिटवीन 2 and 3। यस सर। मैंने e को सपोज कर लिया 2 है, सपोज वो अगर 2 होता है या 3 होता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब 2 का पावर कोई पॉजिटिव नंबर है, इट इज 2 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे है 2 रेज टू पावर माइनस 3। मुझे बताओ क्या ये नंबर इसके सामने कभी टिक पाएगा यहाँ पे? नहीं सर, पॉजिटिव ही होगा वो। बस तो उसको यूज कर दिया मैंने। ठीक है e सर। raised to power x is greater than e raised to power minus x for all x greater than 1। थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है मेरी, है ना, थोड़ा स्लो करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2 वगैरह लगा लो जो करना आपको। दिस मैं सिंपल इस पे जा रहा हूँ। दिस इंटीग्रल इज ओनली ए फाइनाइट रिजल्ट, सो दिस इंटीग्रल इज गिविंग ए फाइनाइट रिजल्ट, दैट मींस इट इज कन्वर्ज। एक रिजल्ट रिपीट कर दो जो अभी आपने बताया था कि अगर दो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होएगा हमेशा। सर वो वाला रिजल्ट एक बार रिपीट कर दो, लिख दो एक बार यहाँ पे। कोई बात नहीं, मेरे 10:30 बजे के बाद आप पूछते रहो यार, आगे चलने दोगे कि नहीं यार? यस इट इज समेशन n साइन ऑफ 1 by n। हाँ जी करिए जरा इस क्वेश्चन को। सो n क्वेश्चन आपको सिंपल ये है कि फाइंड डिस्कस द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity n साइन ऑफ 1 by n। डाइवर्जेंट
divergent. Yes, are you applying integral test? Sir. Yes. Sir, nth The term test. limit n approaches to हाँ, infinity ये वाला मैंने बोला है। मिक्स क्वेश्चन लिया है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास जो इंटीग्रल टेस्ट है, यू गॉट द रेसिपी ऑफ सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जस्ट आपको आपका जो आपका इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे कई बार वो काम आ जाता है कि जो आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an है, सो इफ दिस an इज नॉन जीरो देन इट इज गोइंग टू बी डाइवर्जेंट। तो कई बार ऐसा बहुत होगा आपके पास, इट इज जस्ट लाइक, वन आ रही है सर लिमिट। ठीक है। तो अगर आप इसका लिमिट लेते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n sin of 1 by n, so it is equal to limit n approaches to infinity sin of 1 by n divided by 1 by n, so it is equal to 1, it is not equal to 0, so it is divergent। भाई आपको ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा कि यूज इंटीग्रल टेस्ट, इट इज जस्ट लाइक योर इंटीग्रेशन क्वेश्चन। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x square plus 1 कुछ भी बताया हुआ है, तो ये कोई नहीं बताएगा कि आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, या इफ इट इज x square minus 1 आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, कुछ यूज करना है। जस्ट दे आर कंसर्न्ड with the solution, it is up to you, you can apply any test जब तक ये वो मेंशन नहीं करता। सर एक बार आप ऊपर स्क्रॉल करना ना वो हाइपरबोलिक फंक्शन वाले में। अब क्या होगा उसमें? सर मुझे सर अगर उसमें हम लोग 6 थीटा डालेंगे तो उसके हिसाब से 2i नीचे आएगा ना? ठीक है, कि आप जब फ्री होंगे मेरे से पूरा डिस्कशन कर लेना उसमें, अदरवाइज यू कैन राइट योर कमेंट्स जिसमें चैट बॉक्स में दे दो, मैं आपका डाउट आपके उस पर डाल दूंगा। ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूज अदर्स प्लीज। ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जस्ट इसमें आपको मैंने पहले पेज नंबर लिख के दिया है, आई थिंक ऑन पेज नंबर 500 समथिंग इन थॉमस फिने। सो द होल डिस्कशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन इज गिवन। इफ यू वांट टू शो समथिंग एल्स, कोई अपना आप कुछ बताना चाहते हो तो मेरे को बता देना, मैं सारी क्लास को इन्फॉर्म कर दूंगा। प्लीज अभी क्लास चलने दो। हाँ जी, now we are just to go for your sheet number 2. In sheet number 2 there are so many questions on integral test or ns term series। ठीक है, तो आई थिंक इंटीग्रल टेस्ट में दो ही कंडीशन आपको चेक करना है, पॉजिटिवनेस इन कंटिन्यूटी एंड देन डिक्रीजिंगनेस। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन यू कैन फाइंड इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल के बिहेवियर से आप सीरीज का बिहेवियर जो है वो चेक कर सकते हो। नाउ सर ट्यूट शीट 2 की बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप वहां पे जाओ, अदरवाइज मुझे क्वेश्चन कर देना मेल, मैं आपको जो है उस पर अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशंस। हाँ जी, नाउ we have the benefit of three series. So one is geometric series. Now what is geometric series? Summation a r raised to power n. So it is convergent if mod of r it is less than 1. एक हमारे पास ये बेनिफिट आ चुका है कि summation 1 by n raised to power p, so it is convergent when p is greater than 1. और बीच में आपके पास इंटीग्रल टेस्ट भी है, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। Now the point is कि can we judge behavior of some unknown series with the behavior of some known series। अगर आपको एक सीरीज का बिहेवियर पता है, क्या उसकी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस है, कैन वी जज बिहेवियर ऑफ सम अदर सीरीज? So suppose summation an and summation bn are two positive term series, दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है। नंबर 1, an is less than equal to bn for all n greater than equal to n। किसी एक मतलब a1 a2 a3 ऐसे हो रहा है, और b1 b2 तो चलता जा रहा है। कहीं पे एक n आता है, यहाँ पे an, और यहाँ पे आता है कैन bn। आफ्टर दैट एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि दिस an is less than equal to bn। Now can you tell me whose convergence is going to predict convergence of other? bn। अगर मेरे पास सीरीज bn कन्वर्जेंट है, कैन आई से एनीथिंग अबाउट बिहेवियर ऑफ an? यस सर। यस सर। हाँ, अगर bn डाइवर्जेंट है, कैन वी से एनीथिंग अबाउट बिहेवियर ऑफ an? यस सर। वो भी नो डाइवर्जेंट। सर, नो सर, नो सर। नहीं, No, ऐसे sir. तो दोनों के लिए कुछ होगा नहीं ना। कह सकते। If an is less than equal to bn for all n greater than equal to n, see it is your larger series and it is your lower series, lesser series. So bn plus 1 it is less than। देखो जो पिछला टर्म है ये मैटर नहीं करता, अगर ये फाइनाइट है तो ये फाइनाइट प्लस
ये रहेगा फाइनाइट प्लस ये रहेगा। अगर ये डाइवर्जेंट आता है तो फाइनाइट प्लस डाइवर्जेंट इट इज डाइवर्जेंट, फाइनाइट प्लस कन्वर्जेंट इट इज कन्वर्जेंट। बट इफ योर सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट तो आपका जो ए एन है वो भी डाइवर्जेंट हो जरूरी नहीं है, बिकॉज एवरी सम इज लेस देन इन्फिनिटी। यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव टर्म सीरीज, और पॉजिटिव टर्म सीरीज में जो डाइवर्जेंस है वो इन्फिनिटी वाला ही होता है। तो मैंने अगर ये बोलना है कि बी एन इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब जो बी एन वाली सीरीज है इसका सम इन्फिनिटी होने वाला है। तो अगर ये इन्फिनिटी होने वाला है तो लोअर सम भी इन्फिनिटी हो जरूरी नहीं है। बट इफ योर अपर सम इज फाइनाइट, अगर यही फाइनाइट है, बी एन वाला ही फाइनाइट है, तो ए एन हैज टू बी फाइनाइट। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि इफ summation bn is convergent, so it implies summation an is convergent. So these type of tests, so these are under the heading direct comparison test. Now can you tell whose divergence is going to affect divergence of other? an If an is less than equal to bn, yes. Can we say when an is convergent bn is also convergent? नो सर। no ठीक है, तो लेसर सीरीज छोटा सम फाइनाइट है तो ऐसा नहीं है कि लार्जर सम इज आल्सो फाइनाइट। बट what type of statement can be released if सर an अगर is ए एन divergent? if डाइवर्जेंट है तो बी एन divergent and bn divergent है तो bn भी divergent होगा। Then summation bn is also divergent. डाइवर्जेंट। So एक जैसे आपके पास क्वेश्चन हुआ, अब जैसे अगर ये करो कि summation sin square n divided by 2 raised to power n, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आप कुछ भी अप्लाई कर लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ना आपको ज्योमेट्रिक सीरीज से आंसर मिलना है इसका, ना इंटीग्रल टेस्ट से। इंटीग्रल टेस्ट आपको परेशान करता था कि शायद इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगी इस फंक्शन का, sin square x by 2 raised to power x। बट इफ वी अप्लाई दिस टेस्ट सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट a question of one line, it is sin square n by 2 raised to power n. Now what is the nature of sin square n? सर इंक्रीजिंग है सर। It is सर never increasing nor increasing nor decreasing। नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जहाँ पे तो फंस जाओगे आप, आपका इसका बिहेवियर फ्लक्चुएट करता है। सो ये lies between 0 to 1 0 to 1, यस सर। sin n is between -1 to 1, तो sin square यस n, सर साइन this स्क्वायर value is lying between 1 to 1, 0 to 1, so Yes, that means sir. this value is always going to be less than 1 by 1 2 by raised to 2 power, की पावर n। ठीक है। तो अब आप जरा सोचो कि 1 by 2 raised to power n सीरीज कैसा हुआ by geometric series test, so it is convergent। So by this comparison test, so can we predict behavior of this series? यस सर कन्वर्जेंट। Summation 1 by 2 raised to power n, so it is convergent, so which implies summation sin square n by 2 raised to power n, so it is also convergent। ठीक है, अभी थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस है, आपका टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है। अगर एक ही पॉइंट पे लगे रहेंगे तो आपके ट्यूटोरियल्स वेस्ट जाएंगे। ट्यूटोरियल में कुछ स्टूडेंट जो है वो वेस्ट बैठे हैं, कहते हैं हमारे क्लास में नहीं हुआ, तो थोड़ा क्लास को भी हमें आगे निकालना होता है। सो आई एम लीविंग योर मीटिंग, इट इज 10:30, आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है मेरा भी। सर अगर sin square n 0 हुआ यहाँ तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो सीरीज वैसे कन्वर्जेंट होगी ना। अगर आपका साइन 0 है तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ कि जी सीरीज क्या है आपके पास 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या है, फाइनाइट। सर एक बार स्लाइड ऊपर करना। आप अपना टाइम देख लो यार, मेरा भी। थैंक यू सर। ओके भाई, टाइम हो गया भाई, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। 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 सर आपको ईमेल कहाँ करने होते हैं क्वेश्चन? आप मनप्रीत मैडम को मेल कर दो, मेरे को वो कर देंगे।